Hello, guys. Welcome back once again to my channel, The Nifty City. So, meeting you guys after a very long time. Was kind of busy with work. थोड़ा YouTube के videos करने में demotivated भी था. So, was not coming back with a lot of videos. But now, let's see how it goes forward. So, today's video, what are we going to discuss? Let's dive into that. Very important, hot topic right now, like we all know, is HDFC Bank. तो HDFC बैंक में क्या होने वाला है एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे. एलआईसी को परमिशन मिल गया है. वील डिस्कस ऑल ऑफ दैट. ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी. We'll also take up mid-cap Nifty. Fin Nifty we're not covering today because Bank Nifty and Fin Nifty kind of similar setups hai. So we will discuss all the levels in details, and in the end, I will discuss a really undervalued stock right now, large cap, good undervalued stock that can be added to your portfolio immediately. So stay tuned till the end of the video for all this information. Now, first, let's address the elephant in the room, that is HDFC Bank. तो HDFC Bank में हुआ क्या एग्जैक्टली. ओके, सो सबसे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी. HDFC बैंक के अगर हम होल्डिंग्स देखेंगे, सो यू कैन सी मैसिव अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स इन HDFC बैंक इज फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. ओके, मोर देन 50% एज ऑफ December 23 क्वार्टर is held by foreign institutions. Now the government said, देख HDFC बैंक देखो यार इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया. ओके, सो कहीं ना कहीं जब HDFC बैंक में इतनी सेलिंग होगी, the kind of crash we saw, the results were not as bad as that the crash is showing. Okay, the results are not that bad. Results ठीक है. Net interest margin कम हुआ है. NIMs कम हुए हैं. So it has been decreasing quarter on quarter. Main reason for that is the merger that HDFC has had with HDFC Bank. Okay, HDFC Bank का merger हुआ है. Now this is the main issue जहाँ थोड़ा merger synergies, because cost of capital has gone up. So merger synergies में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, which is fine. Long term view के हिसाब से HDFC Bank is a terrific pick even right now. So first, fundamentally, there is not such a big issue in HDFC Bank. It's a huge bank. Now, what the government is saying is basically not saying it, unofficial stance here. If there is so much selling by foreign institutions in HDFC Bank, HDFC Bank has a huge weightage in Nifty, also the largest private sector bank. तो कहीं ना कहीं market का माहौल खराब होता ही है. Now, to sustain that, to stop that, what is the way when foreign institutions are selling? Domestic institutions step in and try to complete the buying. But now, because of the merger, the rule that states is mutual funds cannot have more than 10% holding in one particular stock. So therefore, they are not able to buy more and more of HDFC Bank. Okay, even though the valuations are very attractive right now. So who will come into this picture? They have got LIC into the picture. Okay, so LIC is one of the domestic institutions that has been given permission to hold up to 9.99% stake in HDFC Bank. Now, इसमें important factor क्या है? LIC already holds 5% of the bank. Okay, तो ऐसा है नहीं है कि 10% की पूरी बाइंग होने वाली है. 5% LIC already holds. They can purchase a further 4.99% stake in the period of 1 year. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. पीपल टेंड टू मिस दिस आउट. इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो ऐसा नहीं है कि मंडे को मार्केट खुलेगा और LIC फाइव फाइव बैलेंस 4.99% का स्टॉक खरीदने वाली है और HDFC बैंक का सर्किट लगने वाला है. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. धीरे धीरे LIC बाई करेगी अप टू 4.99% in 1 year. Now, what significance does this have? Obviously, on Monday, we might see some kind of a bounce. Technical charts, I will show you guys. I will take you guys through the technical charts, levels, everything. Monday ko we will see a bounce. Now, overall in the macro picture, what happens is, so basically, whenever there will be a drop in HDFC, we might see LIC coming in and supporting it and avoid a major crash. Okay, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि HDFC बैंक इधर से ऊपर 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 जाते रहेगा. ठीक है, HDFC बैंक obviously is no more going to be a wealth compounder like it has been over the years, but it is still a very decent 15% annually compounded growth creator over the period of 10 years. So that will still be there. Now, whenever HDFC Bank will drop,
they will be buying. So if you are a short seller, okay, imagine you are a foreign institution, you're a short seller. Now in this situation, a short seller will know that whenever the price will drop, it's going to reverse back up. So therefore, there is not much incentive left to short this particular stock from the foreign institutions point of view. तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग कम होते हुए दिख सकती है. ऑब्वियसली वी विल वेट फॉर कंफर्मेशंस. टेक्निकल चार्ट्स पे लेवल्स है, वी विल डिस्कस दोस लेवल्स. नाउ वो लेवल्स का डिस्कशन विल बी इवन मोर इम्पोर्टेंट वंस वी कंप्लीट आवर इंडेक्स का डिस्कशन. रीजन बीइंग बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से वो लेवल्स आप HDFC बैंक से कोरिलेट कर पाएंगे वंस आई विल गिव यू द लॉजिक बिहाइंड दैट. So then it will become much more easier for you. So let us quickly dive into Nifty first. Okay, so ये Nifty का मंथली चार्ट है. अब निफ्टी के मंथली चार्ट पे पहले हम on a larger basis, let's see what the trend is like. Okay, so now the trend right now is still very much positive. Okay, we've had two monthly back to back superb green candles. Okay, December, November was very good. December especially was fantastic. Now what we are seeing is a slight profit booking from the highs. Okay, if you want, I'll zoom this in for you guys. So this is the structure like it was. Okay, we spent some time here. We gave a breakout of this level, and exactly we have retested this, spent time here, and broken out again. So on the monthly chart, from a broader perspective, is there anything to worry about? Absolutely not. The larger trend is still intact. The Indian growth story is still intact. Okay, now let's get into the weekly chart. Now, weekly chart, you can see there was a lot of sideways movement here. Okay, this period there was a lot of sideways movement here, and then from here we've given a terrific rally. Now if you can see clearly, there is this gap here that is pending. Now this is a very very crucial gap. Agar Nifty ko strength mein rehna hai, then this gap will not be filled. Okay, this is 20,500 ka level. So if I talk about trend from a very broader perspective, okay, if you're doing intraday trading, then this is of no use for you. But if you're, want to know what is this positional swing basis for Nifty, so 20,500 is your ultimate level. Okay, on the weekly chart, this will also be your 21 EMA. Exponential moving average bhi hai 21 ka. So 20,500 is a very very crucial level. You can mark this on your charts. जब 20,500 break होगा, उसके नीचे weekly closing मिलेगी, because we are seeing the weekly chart. So we will have to wait for a weekly closing. If you get a weekly closing below 20,500, then definitely you should not be interested in this anymore. Now let's get into the daily chart, where we will actually discuss all our levels. Okay, now this is your daily chart. Now on the daily chart, if you see here, before we discuss the levels, let's discuss one particular thing. Here we have an island reversal. अब island reversal क्या होता है? Now if you see here, we gapped up. ओके इधर एक गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद हम सस्टेन नहीं किए, इधर एक इनसाइड काइंड ऑफ इनसाइड दे दिया, उसके बाद गैप डाउन हो गए. सो दिस इज बिकम अ आइलैंड. नाउ दीज आइलैंड गैप्स, ओके, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, दीज आइलैंड गैप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फिल. ओके, ये इमीडिएटली फिल नहीं होते, इसमें थोड़ा पेन होता है. सो व्हाट डज दिस मीन? दैट 21,850 के ऊपर जब तक हमको क्लोजिंग नहीं आती, 21,850 के ऊपर डेली क्लोजिंग पे, डेली चार्ट पे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, टिल दैट टाइम देयर विल बी ड्रास्टिक कंफ्यूजन इन द मार्केट. ओके, कीप ऑल योर न्यूज फ्लो असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड, बेसिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, बेसिक लेवल्स के ऊपर एक माइंड बना लो. सो 21,850 इज द लेवल जिसके ऊपर द अप ट्रेंड विल रिज्यूम. अगर 21,850 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है, देन डेफिनेटली ये 22,200 का भी जो हाई लगा है उसके ऊपर जाके 22,500 22,600 तक द इंडेक्स कैन इजिली मूव. राइट, सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड. नाउ ऑन द लोअर साइड, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी? नाउ हियर बेसिकली वी हैव हैड अ इनसाइड डे. Okay, so we've had a bad fall, then we've had some kind of a bounce back from the lows, and then we've had an inside day. Now in all probability what we have to see on Monday is कि Monday को gap up खुलेगा. Okay, that is kind of expected क्योंकि LIC की न्यूज भी आ गई HDFC बैंक के रिगार्डिंग. HDFC बैंक का ADR भी अप है अराउंड 2.5 2.6%. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी 99% मंडे को गैप अप होने वाला है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी इज कि 21,500 के ऊपर गैप अप के बाद डू वी सस्टेन
Okay, even if suppose we don't even open above 21,500, we are open somewhere here. The first trigger will be if we cross 21,500, that will be a buy signal. If we cross and we sustain above this, then we can talk about a movement till this zone. Okay, that is 21,850 से लेके this high of this candle. Okay, if I tell you the exact level, it will be 21,750. तो 21,750 to 850 के बीच में till that target you can assume if we sustain above 21,500. Now on the flip side, what will happen? Okay, what are the levels on our downside? Now the major level that you will have on the downside immediately. So when can we play on the short side? Short side we can play definitely when 21,200 breaks. Okay, so when 21,200 will break, you will have this as your very important zone. Okay, what is this zone? This zone is basically 21,850, 20,850 to 21,000. This is your important first initial support. इधर से एक bounce definitely हमको मिलना चाहिए. Right? Now, before we travel to this, so what my personal bias, my personal thing is that this kind of bounce that we will have will not kind of sustain. Okay, there is going to be a lot of confusion. So what we have is basically in a bull market, we've had stages. Okay, so now here we've had a beautiful rally. This is stage one. Now what we are going to have is stage two is going to be a sideways rally. So stage two में क्या होता है? Basically, you will go up, fall, go up, fall, go up. It's going to be volatile. End of the day, you're again going to be at your highs. ठीक है? तो अगर आप 3 महीने 4 महीने बाद देखोगे आप वापस हाइस पे रहोगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये टाइम पे इंडेक्स में पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया था, राइट? क्योंकि देयर विल बी ब्रेकआउट फेलियर्स, देयर विल बी ब्रेकडाउन फेलियर्स, साइडवेज मूवमेंट, ये सब होगा. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है? इफ यू आर ऑप्शन बायर, तो डेफिनेटली एक ही चीज करनी है आपको, छोटे टारगेट रखना है, क्विकली प्रॉफिट्स बुक करना है. ऐसा मत सोचो कि यार ये अभी ब्रेकआउट दिया है अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा. क्विकली टेक आउट योर प्रॉफिट्स, एंड इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर देन बी hedged at all times. Directional option selling will help you. How it will help you? For example, if the market is moving down, 20,900 का पुट बेच दिया, ओके, विद अ hedge 20,700 का पुट खरीद लिया. मार्केट गोज अप, तभी हमने लॉन्ग साइड के कॉल्स बेच दिए. सो इट्स नॉट दैट इधर आपने स्टैडल कर दिया या इधर आयरन फ्लाई बना दिया एंड देन वेट, क्योंकि इधर आपके स्टॉप लॉसेस दोनों साइड हिट होंगे. सो बी केयरफुल ऑफ दैट. सो 3 सिनारियोज वी हैव डिस्कस्ड. ओके, 21,850 के ऊपर सिंपल लॉन्ग है, तब तक इधर साइडवेज मूवमेंट है. 20,200 के नीचे शॉर्ट है, टारगेट नीचे का रहेगा 20,850 से लेके 21,000. राइट, दिस इज क्लीनली डिस्कस्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. Now bank nifty mein what we have, first let's go to the weekly chart. Okay, and let's open the levels. Yeah, now एक मिनट मंथली कर देता है. Okay, so now here what do we have? So basically here we have a trend line. If I can show you on the full screen. So here basically ये trend line अभी छोड़ दो अभी के लिए. Now what do we have here is, here we have taken support. Okay, it's already been more negative. Definitely Bank Nifty has been more negative compared to Nifty. Reason being HDFC Bank. Okay, clearly reason being HDFC Bank. ना एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स इतने अच्छे आए, सो एक्सिस बैंक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट. आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, इट मेड अ हाई, बट बिकॉज ऑल द बैंक्स आर फॉलिंग इट ऑल्सो केम इनटू द प्रेशर, एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो करेक्टेड फ्रॉम द टॉप. सो नाउ व्हाट डू वी हैव गोइंग फॉरवर्ड हियर? नाउ सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी नो 50 EMA पे, काइंड ऑफ 50 EMA पे इसने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है. नाउ व्हाट आर आवर टारगेट्स एंड लेवल्स? लेट्स सी ऑन द डेली चार्ट. ओके, नाउ डेली चार्ट में यू कैन सी, सो हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग. ओके, इधर का जो बाउंस है ना, दिस यू कैन प्ले इजिली. ये कंफर्मेशन था, इधर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, नो डाउट. But one important thing that we have to discuss here is, so here I have the RSI plotted. Okay, 10 periods का RSI plot किया है ये. Whenever RSI falls below this level, okay, below 30, RSI falls below 30,
and Nifty or Bank Nifty is close to the 200-day moving average, then you definitely expect a bounce in the index at least till RSI touches 40. ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो भी बनाया है। आई बटन पे आपको मैं वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, लॉट ऑफ यू पीपल ऑलरेडी हैव। दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हैज अ 100% success rate. Okay, so it is not a small strategy, it has a 100% success rate. The only downfall of the strategy is you will only get 3 or 4 such trades in a year. ओके, जहां आपका आरएसआई डेली चार्ट पे बिलो 30 है, 10 पीरियड का आरएसआई, एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी इज अबव 200-डे मूविंग एवरेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ही देख लो, हियर आरएसआई इज बिलो बट वी हैव ब्रोकन, वी आर बिलो द 200-डे मूविंग एवरेज। नो डाउट इधर से भी रिवर्सल पूरा आया है हमको, but as per rule you cannot buy here because it is below 200-day moving average. So if you go through the daily chart before के examples, you'll get a lot of things. You can check out the video, उधर मैंने examples के साथ दिखाया है सब कुछ. Anyways, now moving forward, now what do we have here? Okay, इधर एक simple setup है. So basically इधर क्या हुआ, this was a resistance point. Okay, so we came here, took resistance right here, came back again, took resistance here, fell down, made a double bottom kind of formation. Okay, previous bottom को cut करके double bottom बनाया हमने, and then we moved up, okay, with a gap here. Now this gap has definitely been filled here. Now we have bounced. Now once मंडे को ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव, आईसीआईसीआई का भी एडीआर वाज पॉजिटिव, सो मंडे को बैंक निफ्टी विल गिव अ पुश. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल? The most important level in Bank Nifty is 45,800 to 46,300. Sorry, 46,300. Okay, this level. तो ये जो सपोर्ट था हमारा ब्रेकआउट के बाद, अब ब्रेकडाउन हो गया है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा. ओके, नाउ व्हाई 45,800? सिंपल लॉजिक आई विल गिव यू. ओके, ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा एक टेम्परेरी बॉटम हो गया. Now if you can see, the first extension that we have here is 46,000. Okay, this is your first extension, your 9 EMS 45,800. So ये जो zone है ना, this is going to be a very difficult resistance zone to crack for Bank Nifty. So keep that in mind. There will be a lot of people जो ये बाउंस देखने के टाइम पे उनको ऐसा लगेगा ये बॉटम लग चुका है, रिवर्सल हो चुका है, बट जब तक वी डोंट क्रॉस 47,000, till that time and at any point of time we can reverse and break this low. Okay, so keep that in mind. Now on the downside, if we break these lows 45,500 ka, what are your targets? Okay, for me, first target is going to be this 43,284. This is going to be your first target. Just keep this much in mind. उसके आगे भी गिर सकता है और नहीं गिर सकता, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, बट टिल नाउ ये इतनी दूर की हम डिस्कस नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू सी इज, जब बैंक निफ्टी ये जोन में रहेगा, दो चीजें देखनी है हमको. एक तो इधर के चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहा है, इधर कोई रिवर्सल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सेकेंड थिंग यू हैव टू सी इज ओआई डेटा. ओके, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना है आपको. ओपन इंटरेस्ट डेटा में इफ यू सी वेरी गुड कॉल राइटिंग एट 46,000 टू 46,500, ओके, ये जोन में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग अगर दिख रही है तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ रिवर्सल. रिवर्सल का मैं आपको एक ट्रिगर भी बता देता हूँ. रिवर्सल का मेजर ट्रिगर विल बी 31st के आसपास का आपका यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट है. मार्केट्स का पूरा रैली वाज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स होने वाले हैं. नाउ अ डैम्पनर टू दैट इज, नंबर वन, यूएस फेड के मेंबर ने आके कहा कि वी विल सी डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन डेटा, वी आर नॉट श्योर येट वेदर वी विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स और नो. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, ईसीबी इंग्लैंड की जो सेंट्रल बैंक है, they have kept the rates unchanged. They have not decreased the rates. So if such a news comes where the interest rates are unchanged, they are not decreased, then we will see a sharp reaction in the market because market has already factored in 4 rate hikes in 2024. So if that is not going to happen, then we are going to see further pain. So you have to be careful in that kind of situation. Now let us quickly get into mid cap.
मिड कैप स्टॉक्स भी देख लेते हैं, इंडेक्स. सो दिस इज योर मिड कैप इंडेक्स. अब मिड कैप इंडेक्स में इट इज बीन वेरी क्लियर दैट वी हैड स्मॉल कैप मिड कैप में अ ब्यूटिफुल रन अप. ओके, इधर खाली बीच में एक दिन का लंबा करेक्शन आया था, वे यू कुड हैव सीन मिड कैप्स वर 5%, 6%, 7% डाउन स्टॉक स्पेसिफिक. सो हियर वी हैड अ गुड डेंट. 21 ईएमए को रिटेस्ट किया एंड देन अगेन वी मूव्ड अप. नाउ अगेन हियर 21 ईएमए तक आए, अगेन वी मूव्ड अप. नाउ हियर अगेन वी हैव स्ट्रगलिंग एट अराउंड 21 ईएमए. मिड कैप में इन दिस फॉल दैट वी विल हैव नाउ सबसे ज्यादा हल्के होंगे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. ओके, till now we have not seen any major correction in mid caps and small caps. Now you will see those kind of corrections in mid caps and small caps, so be very very careful in mid caps and small caps. Obviously stock specific areas will keep performing, but you have to be very careful. Keep your stop losses, trail them properly. Okay, the level that I'm looking at in mid cap is 9,904. This is your level. ऑब्वियसली अगर ये हाई ओपन इज इक्वल टू हाई जो आपका था, ये इसके ऊपर गया, तो देन द रैली कैन कंटिन्यू ऑल्सो. ओके, वी आर कीपिंग बोथ आर साइड्स ओपन, वी आर नॉट क्लोजिंग एनीथिंग. बट ऑन द डाउन साइड आई डोंट थिंक दैट इट विल स्पेंड टाइम हियर. टाइम वाइज करेक्शन नहीं होगा इस बार, प्राइस करेक्शन होगा. एंड 9,900 तक ये जो सपोर्ट बना है इधर, इधर तक आ सकता है वेरी इजिली मिड कैप निफ्टी. ओके, आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली मंडे को मिड कैप का एक्सपायरी है, मंडे की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ मंथ व्यू फ्रॉम हियर. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेली व्यू. नाउ कमिंग बैक टू HDFC बैंक. नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द लेवल्स, HDFC बैंक. नाउ HDFC बैंक का वेरी इजी टेल वाज बेसिकली ये ओपन इज इक्वल टू लो जो इधर बना है. Okay, gap down khula, open is equal to low, and then we've had a beautiful candle. This indicates a reversal in HDFC Bank. Now this much we know. Now this reversal will be till where? Okay, this reversal bolo, pullback bolo. So for that, what we've done is, I'll just hide this. What we've done is basically, now we know this is the top. This was kind of the bottom. Okay, first level is 1510. The second level is 1550. I personally feel it can rally till this zone of 1550. Now, why is this zone very important? Okay, this zone 1550 to 1560. Why is it so important? I'll tell you. So if you see here, it was a resistance, came down. इधर हमने एक बड़े गैप के साथ ये रेजिस्टेंस जोन को पार किया. उसके बाद we spent time here. Again, we took support here twice, went up, spent time here. Again, third time we took support here. Finally, we broke it. Again, we took resistance here, and then we went up, and then the results came. Okay, इधर basically क्या लग रहा था हम लोग को कि दिस वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल राउंडिंग पैटर्न अगर इधर से ब्रेकआउट देता, बट इसने राउंडिंग पैटर्न फेल कर दिया. ओके, कप एंड हैंडल का जो पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम का, ये ऐसे जाना चाहिए था. इधर मस्त हैंडल भी बन रहा था लो वॉल्यूम्स पे, बट द पैटर्न हैज फेल्ड बिकॉज द रिजल्ट्स केम आउट एंड वी हैव क्रैश्ड. नाउ इन दिस टेक्निकल सिनारियो व्हाट हैपेंस इज यूजुअली जितना ये लेंथ है उतने का हमको इधर से डाउनफॉल देखने मिलता है. उसका टारगेट आ रहा है समवेयर अराउंड 1200. ओके, 1270 का इसका मेजर सपोर्ट भी है. सो दिस 1200 इन HDFC बैंक is your crucial level. Okay, which is still around, from today's levels, it is around, you can say 12 to 15% away. So immediate targets nahi hai ye, but definitely on the upside we have to kind of be cautious at these levels 1550 to 1560 and 1510. इसके पहले का जो इधर का लेवल था 1510 का, these are your crucial levels. 1500 तक तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली एक बाउंस हम देख सकते हैं बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे. बट व्हाई आई एम गिविंग यू लेवल्स इन एडवांस इज सो दैट वी कैन बी केयरफुल एंड लुक फॉर रिवर्सल्स और काइंड ऑफ बुक योर प्रॉफिट्स इफ देयर इज अ रिवर्सल फ्रॉम हियर. ओके, व्यू कब नेगेट होगा? जब हम ये लेवल, ये जो गैप बना है इधर 1600 के ऊपर, एज एन एस बैंक निफ्टी बोल रहा है, HDFC बैंक गिव्स अ क्लोजिंग, देन डेफिनेटली 1600 के ऊपर it will sustain. Okay, then we can say ये एक bottom बन चुका है and now we will see an upside reaction. Right? Now, what is the one stock that I want to discuss with you guys? This one stock is very interesting right now, Page Industries. Okay? Now, Page Industries का stock, quickly I will discuss with you guys why is it such a good buy right now. Okay, now this is the monthly chart.
Okay, now if you see monthly chart में, it Page Industries beautiful trend. Okay, so if you see right from here, इधर एक base and then breakout. Okay, right from 550 odd levels, it has rallied a lot, went to make a high of close to 60,000. Okay, so it has been 55,000 के आसपास. It has been a very good rally. Now what we've seen here, ये जो बेसिक एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये रीटेस्ट करने आया है, इधर टाइम स्पेंड कर रहा है. ओके, देयर आर 2-3 ways you can interpret this. Some people will call this a tight flag. ओके, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप बोल सकते हो, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी आप बोल सकते हो. तो व्हाट आर द अदर कॉन्फ्लुएंसेस दैट वी हैव हियर? ओके, सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी हैव 50-day मूविंग एवरेज हियर, okay, which is also a very good support. The other thing that we have is if we use Fibonacci, okay, swing to swing, you can see 50% retracement level is also here. So we have three important factors. Fundamentally, company is sound. Okay, if I show you the net profit has increased year on year. It's increasing year on year. Market share is good. Everything is good fundamentally for this stock. It is just taken some kind of a retracement. Now retracement इसमें कितना हुआ है? Okay, here if I show you guys, almost 34.5% down from its high, right? So this is a very good value zone for Page Industries. Retail holding is very low in this stock. So definitely you should consider adding Page Industries to your portfolio at these levels. Okay, it is similar to what we covered in Britannia. I had covered Britannia on my Instagram reels. I had covered Oberoi Reality. Okay, it's given you 40% plus return. Uh, Britannia gave you very good return. Similarly, Page Industries will give you very good returns. So you can keep that in your portfolio. As usual, if you like the video, please hit the like button. Please comment if you missed these videos. So it will help us realize that you want more such kind of information, such kind of videos with technical levels. And comment, like, share, subscribe. Thank you so much, guys. Take care. Have a great week ahead.